Hi, welcome to my YouTube channel. This is Ali and आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ टैक्स फंक्शंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे 365 में। ये टैक्स फंक्शंस बहुत ही यूज़फुल हैं और ये बहुत ही यूज़ हो रहे हैं टैक्स फंक्शन 365 में। We will discuss today about the text split, text join, text before, text after, and some other functions like text and clean and trim. So come to my data and we are looking a new function. It's called TEXTJOIN. तो यहाँ पे मेरे पास एक HR रिलेटेड डेटा है जिसमें सेल्स पर्सन से लेकर कंट्री, प्रोडक्ट अमाउंट, रीजन और रैम। यहाँ पे येलो कॉलम में मुझे जो है वो रीजन और रैम का डेटा चाहिए, तो आई विल यूज the main function which I very really like is the text join. In text join you only write the text join equal to the text join and choose the delimiter, right? And I am using the comma for the dash for the joining these both. So I'll use the e2 as a one function and f2 as an other reference and put the true for default. So ये जो है वो condition को match करेगा and just enter. So you see that our two columns merge into the one. So this is the text join function. So we will move another function is called text split. यहाँ पे वहाँ पे text join में दो columns को merge करना था और we have the delimiter, and in text join text split what we are doing, we split the function, we split the column in two columns, product and brand. We have the two columns, right? So in I will use the text split equal to the text split and I will give the reference of the uh, cell which is the A2 equal to the text split and A2 for the cell reference, and I'll use the delimiter which is the dash, so it just split one column into two. यहाँ पे आप देखेंगे और उसके बाद मैं डिफॉल्ट में यूज करूँगा ट्रू, and it is the case sensitive. I also use the ignore empty cells and I use the function for the case sensitive. So you have the two columns, product and brand, in a separate. So I split one column into two, right, with a delimiter. This is the text split function. We will move another function is called text before. यहाँ पे कस्टमर और लोकेशन के कॉलम में जो है वो एक लेस देन का साइन पुट हुआ है, तो I need the names of the customer. So how I can bring the customer's name? So I use the text before equal to the text before, and after that I'll use the A2 as a cell reference, and after that I'll use the delimiter जो यूज हुआ है लेस देन का साइन यूज हुआ है, तो I will use that one and one as a default and just ignore the empty cells and just enter and close the bracket and enter. So you can see that this is the customer name. I just separate the regions or location from the customer name while using the delimiter. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो कस्टमर का नेम आ गया और while using the text before.
So we are moving another formula is called text after. वहां पे मेरे पास text before में I just have the स्मॉल साइन, स्मॉलर देन साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस हुआ हुआ, इक्वल का साइन है पूरे कॉलम में, यू कैन सी. सो आई विल यूज द टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन with the delimiter, and I will give the reference of that column and use the text after function. एंड यहाँ पे मैं डिलीमीटर यूज कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दी वन एज अ डिफॉल्ट, एंड it is also ignore the empty cells for that, so I'll use the 0, and you can see that we have the um, function, right? So here I will use the three functions. यहाँ पे एक text का function use करूँगा और clean and trim. So I'll also show that what is the difference between clean and trim in this function. So first function I'll use the text. यहाँ पे मेरे पास dispatch date का column है, or you can see that these are the values. Date is converted into values. So यहाँ पे use करूँगा मैं equal to the text, and after using the text I will just break the text into the y. I need the year, so I'll use the y four times y. तो मेरे पास जैसे for example I am asking about the 2025, so we have 2025, तो यहाँ पे फोर टाइम y लिखूंगा, इंटर करूँ प्रेस करूँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल यूज दी mm for the month and dd for the date. So you can see that how this function converted values into the accurate date, and I'll use the, and I will press the enter. Yes, here is the date according to the uh, according to the column, right? And like we have the trim and clean. So ट्रिम बेसिकली यूज होता है कि जहाँ पे स्पेसेस हैं उस स्पेसेस को रिमूव करके, और एक जो है वो वर्ड के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस को जो है वो मैंडेटरी शो करवा देता है, तो इसी वजह से हम ट्रिम यूज करते हैं. एंड क्लीन हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे क्लीन और ट्रिम में क्या फ़र्क है. क्लीन जो है जहाँ पे हम वेबसाइट से कोई डेटा कॉपी करते हैं तो उसके बीच में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है वो क्लीन इस्तेमाल करते हैं. इक्वल टू द ट्रिम, यहाँ पे मैंने सेल्स का रेफरेंस दिया, एंड आई जस्ट इंटर दैट रेंज एंड कॉपी द फंक्शन. So you can see that we have just removed the spaces, while clean में remove spaces नहीं होते. यहाँ पे जैसे कि characters और rows को break करने में जो एक यूज होता है मेन फंक्शन, या रोज को ब्रेक करने करके एक पर्टिकुलर रो में डेटा को लाने के लिए हम जो है वो क्लीन यूज करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लीन में स्पेसेस रिमूव नहीं हुए, राइट. ट्रिम में स्पेसेस रिमूव हुए हैं, क्लीन इज बिहेविंग सेम, राइट. सो यू कैन सी दैट, राइट. जो मेन डिफरेंस मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ वो ये है कि ये यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट हुआ है, ठीक है. दो लाइंस में टेक्स्ट जो है वो एक ब्रेक हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे पेस्ट द वैल्यू करके वो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ट्रिम और क्लीन में क्या डिफरेंस है. ट्रिम यहाँ पे स्पेसिस को रिमूव कर रहा है, बट
जहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है वहाँ पे ट्रिम काम नहीं कर रहा, वहाँ पे यू कैन सी दैट हाउ क्लीन वर्क्स व्हेन यू हैव टू लाइंस इन अ वन कॉलम। और ये जो है वो ब्रेक हुआ है दो रोज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि trim just make it into one row. So I hope you got my point and you got my discussion. And please do comment if you have any kind of the suggestion for me. Please, what I have also created one video and I just put the description link in the video section, so you can also check